A warm hello to the students of Jammu and Kashmir and Ladakh. My dear friends, the fresh set exam has been announced. As Ladakh has become a union territory, the set exam has been announced for Jammu and Kashmir and Ladakh set. Now see this thing, as you can see this detail, I'm going to tell you about the timings so that many of you can check exact timings and can fill the forms accordingly. The first thing on your screen, as you can see this, the date of issue of notification, 28th of April, the notification has been released. First of all, notification आ चुकी है, 28 अप्रैल को है. Commencement of online application, 5th May. 5 मई से applications available हो जाएंगी. इसको नोट करो अपने मोबाइल में. Reminder लगाओ. Put a reminder in your mobile phone that 5th May, the forms online applications will be starting. Last date of submitting the online form is 4th June 5 p.m. People like me who are overly busy, they end up missing this exam. So if you are working, if you are a married person, if you know that you can miss this thing, put a reminder at least. This is 4th June, the last date, 5 p.m. Fill the forms, don't miss it. The last date for submitting online application is 5th June. This is the last thing. Like fees can be given the last day. For final submissions, everything will be like 5th of June. That's the last thing. And then correction window. So if you have made any mistake of signature, mistake of photograph, correction window will go by 9th June. But don't miss it because you can't pay your fees after 4th June. So remember 4th June is the last date technically. Last date 11th June. That's for correction window last date. The last date of correction window. Now comes the question. When do we have our exam? Point to be noted. Put a reminder in your mobile phone. 1st October Sunday. Date of test 1st October Sunday. 10th month. So 10th month is October. 1st of October Sunday. I am trying to be the part of this thing. I may be available in Ladakh. So if I take this form, if I fill the exam because I have not qualified JKSET or Ladakh set because of 370, now after the 370, I can also apply, you can also apply. As many of you must be thinking to apply for it, I must tell you some important points. The first thing, please focus on this thing, that the applicants are advised to submit the online application form without waiting the last date. So don't wait for it, fill the forms. Second thing that you have to check is, these are the subject code. If you are the English literature student, the subject code for English is 15. If you're from other subjects, there are different code numbers have been mentioned. Now, along with these things, one important point that you have to note it down. You may be from other states, and if you think that you will also apply for the Kashmir set, Jammu Kashmir set or Ladakh set, my dear friends, please note it down. It is clearly mentioned in this brochure that if you are from other states outer than Ladakh and Kashmir, Jammu Kashmir, so your category will be general. So even if you are in other categories or you belong to SC, ST, OBC or any other criteria of the category, if you apply for this exam, your markings will be based on the markings for the UR category, unreserved category. Point to be noted because sometimes people attempt exam and then they get confused with the markings. Point note कर लीजिएगा, सबसे important है, clearly mentioned है, the candidates belonging to reserved categories of other state except Union Territory. If you are from Union Territory, you are from Pondicherry, you are from Lakshadweep, then you will have the same caste, same category. Then, however, that shall be treated as unreserved category. Along with these things, one more thing that you have to remember here is the conditions. So conditions are just like net, 55% for unreserved, 50 for others. Along with this, one important point is for PhD qualified students, people those who have done PhD. If you have done your PhD before 1991, see it is written, the PhD degree holders whose master's level examination had been completed by 1991. आपका मास्टर्स, आपकी MA 1991 से पहले हो गई और आपके पास अभी PhD है. So, irrespective of the date of declaration of result, result से मतलब नहीं है. अगर आपकी 1991 से पहले मास्टर्स हो गई है और आपके पास फिलहाल PhD है,
shall be eligible for a relaxation of 5% in aggregate marks for appearing in JKSET. आपको भी 55% MA में रखने की जरूरत नहीं है. You can appear in the exam with 50%. So most of you, the senior professors, most of you who still feel like you have done good MPhil, PhD, MA, but if you feel like attempting Jammu Kashmir SET exam, Ladakh SET exam, you can use this benefit. Then there are some other details. The form fees for general categories 1100, for other categories 880, 660, 660. These things are clearly mentioned here. Form filling will be online, and the last and most important point, that make sure when you fill the form, your application form, your fees submission form, everything should be with you, because when you will qualify the exam, they will call you for counseling. In the counseling, you will have to be present physically, bringing those documents. जब एग्जाम निकल जाएगा, पास हो जाएगा, तो वो काउंसलिंग करेंगे, और काउंसलिंग में आपके पास फॉर्म फिलिंग की सारी डिटेल होनी चाहिए, और आपको खुद जाना पड़ेगा. मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूं. मैंने 17+ सेट एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं. कई एग्जाम्स ऐसे थे जहां पे मैं फिजिकल काउंसलिंग के लिए नहीं जा सका, तो मुझे सर्टिफिकेट्स नहीं दिए गए. मुझे मार्क्स या जो एक मार्कशीट होती है उस बेस पे काम चलाना पड़ा. तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है सबके लिए, खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नेट को भी एग्जाम दे रहे हैं, नेट की भी तैयारी कर रहे हैं. इस वक्त हमारी साहित्य क्लासेस में, चूंकि मैंने 9th नेट क्वालिफाई किया, मेरा 8वां नेट लद्दाख में हुआ था -20 में. 9th नेट क्वालिफाई करने के कारण हमने एक ऑफर निकाला. यस, एक ऑफर. और ऑफर क्या है? जो स्टूडेंट्स हमें अभी बैच में ज्वाइन करेंगे, हम उन्हें आने वाला एग्जाम, जो जून एंड में नेट का एग्जाम होगा, उसमें पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे. यानी कि अगर आप हमें अभी ज्वाइन करते हो, तो जून तक हम आपका सारा सिलेबस कवर करेंगे विद डिजिटल बोर्ड. लिटरेरी क्रिटिसिज्म की क्लासेस शुरू भी हो चुकी हैं. लास्ट बैच आपका 30 अप्रैल में बनने वाला है, लास्ट बैच है. इसको ज्वाइन करने का एक डायरेक्ट बेनिफिट है. अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं हमें, तो हम आपको जून तक पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, एंड देन जुलाई टू दिसंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा. कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे. यानी कि ज्वाइन अभी करो, टिल दिसंबर तक पढ़ो. तो आप में से जिसका भी सेट एग्जाम है, लद्दाख सेट, जिसका भी सेट एग्जाम है, कश्मीर सेट, आपके बहुत बेनिफिट्स होंगे. आप जून का एग्जाम भी निकालोगे, नेट क्वालिफाई करोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 90 दिन आपके सेट एग्जाम में होंगे, वो भी पढ़ोगे, और दिसंबर में फिर से नेट एग्जाम दोगे. इस बैच को ज्वाइन करने का एक सिंपल सा तरीका है. इस वीडियो स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए. इसमें बाकायदा ज्वाइनिंग मेथड मैंने क्लियरली बताया हुआ है. आप चाहें तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. मेरा निवेदन है कि व्हाट्सएप और कॉल्स के बजाय आप डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे पास इस फ्री ऑफर की वजह से बहुत सारी कॉल्स पर डे आ रही हैं. एक एवरेज हमारे पास 1200 से 1500 कॉल्स आ रही हैं. तो हो सकता है हम आपकी कॉल ना उठा पाएं, या लगभग आपको 24 घंटे के बाद जवाब मिले. तो आप विनीत पांडे को जानते हैं, मेरा फेस आपके सामने है, मेरी आवाज में इंफॉर्मेशन है. आप इस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को फॉलो कीजिए, ज्वाइन करिए, अपने ज्वाइनिंग फीस स्लिप स्क्रीनशॉट हमें फॉरवर्ड कीजिए, और अपनी पढ़ाई हमारे साथ शुरू कीजिए. मिलते हैं लद्दाख में.